Greetings in the most powerful and precious name of our risen Savior, Lord Jesus Christ. یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام. ہم یسوع مسیح کا شکر کرتے ہیں کہ آج ہم یہاں پہ جمع ہیں. The name above all names. یسوع نام جو ہر نام سے اعلیٰ ہے. Every knee shall bow, اور ہر گھٹنا یسوع نام کے آگے جھکے گا. and every tongue shall confess اور ہر زبان یہ اقرار کرے گی that Jesus Christ is Lord. کہ یسوع مسیح زندہ خداوند ہے. Such a beautiful assurance we have اور اس قدر خوبصورت تصدیق کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں that we who were not chosen, کہ ہم وہ جو چنے ہوئے لوگ نہ تھے, we who were not with any Jewish background, اور ہم میں سے کسی کا بھی جو پس منظر ہے وہ یہودی نہ تھا, we were grafted, لیکن خداوند نے ہمیں اپنے ساتھ پیوست کیا. we were grafted into the original olive tree. اور ہمیں اصل جو زیتون کا درخت ہے اس کے ساتھ پیوست کیا گیا. Such a beautiful love, اور یہ بے حد ایک خوبصورت محبت ہے, a love story ایک ایسی محبت کی کہانی that I didn't have to earn it. جسے ہمیں خود سے حاصل نہیں کرنا پڑا. And Christ died for me. اور یسوع مسیح میرے لیے ہوا. I think at the back there is no sound. پیچھے آواز نہیں آ رہی. Can you hear now? Okay. And today we are going to look اور آج ہم یہ سیکھیں گے into God's redemptive grace. کہ خدا نے کس طرح سے ہمارے لیے اپنا فضل بخشا تاکہ ہم نجات پائیں. The grace that is expanded, ایک ایسا فضل جو کہ محیط ہے, beyond human imagination. جو کہ انسانی سمجھ سے باہر ہے. Human mind cannot fathom it. اسے انسانی ذہن نہیں سمجھ سکتا. Such a beautiful love story ایک بے حد خوبصورت محبت کی کہانی that we didn't have to earn. جسے ہمیں خود سے کمانا نہیں پڑا, We didn't have to earn by doing anything good. اور ہمیں کسی اچھے کام کے ذریعے سے کمانا نہیں پڑا, But it was given to us as a free gift. لیکن یہ ہمیں ایک مفت تحفے کے طور پر دیا گیا. Let's turn into the Word of God. آئیے ہم خدا کے کلام کی تلاوت کریں. And basically we will be focusing on the letter of Galatians اور جو ہماری بنیادی توجہ ہے وہ گلاطیوں کے خط پہ ہوگی that Apostle Paul wrote جو کہ پولس رسول نے لکھا to the church of Galatians. گلاطیوں کی کلیسیا کے نام. And just remember that there wasn't one church in Galatia. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب گلیشیا ہے وہاں پہ محض ایک کلیسیا نہ تھی. There was more than one church and number of churches. وہاں پہ بے شمار کلیسیاں اور چرچز تھے. We'll come to Galatians chapter 2. اور ہم جو حوالہ دیکھیں گے وہ گلاطیوں کا خط اس کا دوسرا باب ہے. Galatians chapter 2. Sister Nomi, I think instead of reading in English, maybe read from the beginning. Yes. We'll start from the beginning. Just read till verse 15 and then we will continue later. گلاطیوں کا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 15 آیات. گلاطیوں کا خط دوسرا باب اور اس کی پہلی 15 آیات. خداوند کے کلام میں لکھا ہے, آخر 14 برس کے بعد میں برناباس کے ساتھ پھر یروشلم کو گیا اور تیتس کو بھی ساتھ لے گیا, اور میرا جانا مکاشفہ کے مطابق ہوا, اور جس خوشخبری کی غیر قوموں میں منادی کرتا ہوں وہ ان سے بیان کی, مگر تنہائی میں انہی لوگوں سے جو کچھ سمجھے جاتے تھے, تا ایسا نہ ہو کہ میری اس وقت کی یا اگلی دوڑ کو بے فائدہ جائے. لیکن تیتس بھی جو میرے ساتھ تھا اور یونانی ہے ختنہ کرانے پر مجبور نہ کیا گیا. اور یہ ان جھوٹے بھائیوں کے سبب سے ہوا جو چھپ کر داخل ہو گئے تھے اور جو چوری سے گھس آئے تھے, تاکہ اس آزادی کو جو ہمیں مسیح یسوع میں حاصل ہے جاسوسوں کے طور پر دریافت کر کے ہمیں غلامی میں لائیں. ان کے تابع رہنا ہم نے گھڑی بھر بھی منظور نہ کیا, تاکہ خوشخبری کی سچائی تم میں قائم رہے. اور جو لوگ کچھ سمجھے جاتے تھے خواہ وہ کیسے ہی تھے, مجھے اس سے کچھ واسطہ نہیں, خدا کسی آدمی کا طرفدار نہیں,
سے جو کچھ سمجھے جانے تھے مجھے کچھ حاصل نہ ہوا، لیکن برعکس اس کے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جس طرح مختونوں کو خوشخبری دینے کا کام پطرس کے سپرد ہوا، اسی طرح نامختونوں کو سنانا اس کے سپرد ہوا، کیونکہ جس نے مختونوں کی رسالت کے لیے پطرس میں اثر پیدا کیا، اسی نے غیر قوموں کے لیے مجھ میں بھی اثر پیدا کیا۔ اور جب انہوں نے اس توفیق کو معلوم کیا جو مجھے ملی تھی، تو یعقوب اور کیفا اور یوحنا نے جو کلیسیا کے رکن سمجھے جاتے تھے، مجھے اور برناباس کو دہنا ہاتھ دے کر شریک کر لیا تاکہ ہم غیر قوموں کے پاس جائیں اور وہ مختونوں کے پاس، اور صرف یہ کہا کہ خلیفوں کو یاد رکھنا، مگر میں خود ہی اس کام کی کوشش میں تھا۔ لیکن جب کیفا انطاکیہ میں آیا تو میں نے روبرو ہو کر اس کی مخالفت کی، کیونکہ وہ ملامت کے لائق تھا، اس لیے کہ یعقوب کی طرف سے چند شخصوں کے آنے سے پہلے تو وہ غیر قوم والوں کے ساتھ کھایا کرتا تھا، مگر جب وہ آ گئے تو مختونوں سے ڈر کر باز رہا اور کنارہ کیا، اور باقی یہودیوں نے بھی اس کے ساتھ ہو کر ریاکاری کی، یہاں تک کہ برناباس بھی ان کے ساتھ ریاکاری میں پڑ گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ خوشخبری کی سچائی کے موافق سیدھی چال نہیں چلتے، تو میں نے سب کے سامنے کیفا سے کہا کہ جب وہ باوجود یہودی ہونے کے غیر قوموں کی طرح زندگی گزارتا ہے، نہ کہ یہودیوں کی طرح، تو غیر قوموں کو یہودیوں کی طرح چلنے پر کیوں مجبور کرتا ہے؟ وہ ہم پیدائش سے یہودی ہیں اور گناہ گار غیر قوموں میں سے نہیں۔ آمین۔ And we'll continue when we need the rest of the verses later. So here we see, just to understand the word of God, let's understand the background that Paul is here, and we see that it is his second trip to Jerusalem 14 years later. When was his first trip? So his first trip to Jerusalem was 3 years after he met Jesus on the road to Damascus. Paul's first trip was 3 years after he met Jesus on the road to Damascus. اور خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر سمجھنا بےحد ضروری ہے کہ پولس رسول کا یہ دوسرا وزٹ تھا وہاں پر کلیسیا کے پاس 14 سال کے بعد، اور اس سے پہلے جو انہوں نے پہلا یہاں پہ وزٹ کیا وہ جب ان کی ملاقات دمشق کی سڑک پر خداوند یسوع سے ہوئی، اس کے 3 سال کے بعد تھا۔ So please remember, his first trip was after 3 years to Jerusalem, and now his second trip is after 14 years. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ ان کا جو پہلا ٹرپ تھا وہ 3 سال کے بعد تھا، اور جو دوسرا ٹرپ ہے وہ 14 سالوں کے بعد ہوا ان کا سفر۔ Yes, and we see with Barnabas he also takes Titus, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ برناباس کے ساتھ تیتس کو بھی لے کے گیا، and they were well respected, اور وہ وہاں پہ کافی باعزت سمجھے جاتے ہیں، especially Barnabas. خاص طور پر برناباس۔ Barnabas is known as a son of encouragement. That's what his name means. اور برناباس کا مطلب ہے حوصلہ افزائی کا بیٹا، And he was Levite of the county of Cyprus. اور وہ جو سائپرس کا ملک ہے اس میں ایک لاوی تھا، And people respected Barnabas. اور لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے، He also had a Jewish background. اور اس کے ماحول بھی یہودی بھی تھا۔ But the second person that is going along with Paul, لیکن دوسرا شخص جو پولس رسول کے ساتھ گیا، Titus, تیتس، he is being judged by the believers, by the leaders of the church. اس کو جو وہاں پہ کلیسیا کے لوگ ہیں، جو بزرگان ہیں، اس کو جج کر رہے تھے۔ Why they were judging Titus? اور وہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ Because Titus was a Gentile. کیونکہ وہ غیر قوم سے تھا۔ Before he accepted Jesus as his personal savior, اس سے پہلے کہ اس نے یسوع مسیح کو اپنے ذاتی نجات دہندہ کے طور پہ قبول کیا، he did not have a Jewish background. Is it too loud? Is this, yeah. اچھا کام کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو سب لوگ اس کو اس لیے جج کر رہے تھے کیونکہ اس کا جو پس منظر تھا وہ یہودی نہ تھا، وہ غیر قوموں سے تھا۔ His background was not Jewish, وہ یہودی نہیں تھا، and he converted to Christianity. اور وہ مسیحیت میں داخل ہوا۔ But we see a very sad dilemma that is taking place. لیکن یہاں پہ ہم ایک بے حد افسوسناک بات دیکھتے ہیں۔ We see something
something that we don't expect from the family of God. और हम एक ऐसी चीज देखते हैं जो कि हम खुदा की कलीसिया या खुदा के लोगों से तवक्को नहीं कर रहे होते. Titus has been elevated by Paul. और जो तीतस है उसको पौलुस रसूल ने मुंतखब किया था. We won't read this verse, but I can just say 2 Corinthians chapter 2 and verse 13. और इसका हवाला हमें दूसरे करंथियों के खत में 13 बाब में मिलेगा. And Paul says, Titus is my brother, और वहाँ पे पौलुस रसूल कहता है कि तीतस मेरा भाई है. and I have no peace till Titus comes back. और जब तक वो वापस नहीं आ जाएगा मुझे इत्मीनान ना होगा. Paul is waiting for Titus और पौलुस रसूल तीतस का इंतजार कर रहा है so they can preach the gospel together. ताकि वो इकट्ठे खुदा के कलाम की मुनादी करें. 2 Corinthians chapter 7 verse 6. दूसरे करंथियों के खत 7वें बाब की 6वीं आयत में लिखा है How Paul was comforted. कि किस तरह से पौलुस को उसके आने से तसल्ली हुई. 2 Corinthians chapter 8 verse 6. दूसरा करंथियों 8वें बाब की 6वीं आयत में भी लिखा है Paul trusted Titus कि पौलुस रसूल जो है वो तीतस पर भरोसा करता था that he would take the collection from the Corinthian believers कि वो करंथियंस की कलीसिया से जो खैरात का पैसा है उसे लेगा and he will go to the poor believers in Jerusalem. और जो गरीब ईमानदार थे यरूशलेम में He will take it to them. वो उनके पास उन्हें दयानतदारी से ले जाएगा. Paul's heart was with Titus. और पौलुस का दिल जो है वो तीतस के साथ जुड़ा हुआ था. He was not judgmental of Titus' background. वो इस हवाले से उसके ऊपर तनकीद नहीं कर रहा था कि उसका पस मंजर क्या था. He did not say he was not a Jewish. उसने ये कतई नहीं कहा कि वो यहूदी नहीं था. If you go into Acts chapter 11, और अगर हम इस हवाले से अमान की किताब में देखें 11वें बाब में here Paul brought a gift from Christians in other cities to the Christians in Jerusalem. तो हम देखते हैं कि जो दूसरी जगहों के ईमानदार थे उनसे मुख्तलिफ तोहफे उस कलीसिया के लिए लेकर आए जो कि यरूशलेम में थी. Because there were poor people in the church of Jerusalem. क्योंकि जो यरूशलेम में बहन भाई थे या जो कलीसिया थी वो गरीब लोग थे. And at that time, और उस वक्त में there is a contention going on among the believers of the church. और हम ये देखते हैं कि जो कलीसिया में बहन भाई थे उनमें आपस में रंजिश चल रही थी. They were calling the Gentiles who had converted to Christianity, और वो उन गैर कौमों के बहन भाइयों को जो कि मसीहत में शामिल हो गए थे they were not accepting them. वो उन्हें कबूल नहीं कर रहे थे. They said that accepting Jesus directly from Gentile to a believer is out of question. और वो ये कहते थे कि इस बात का सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो लोग जो गैर कौम से हैं वो भी यीशु मसीह को कबूल करें. They had this vague idea in their mind और उनके ज़हन में एक अजीब ख्याल था that salvation in Jesus is only through for the Jewish people. कि यीशु मसीह के जरिए निजात सिर्फ यहूदी लोगों के लिए है. And if the Gentiles they accept Jesus as a personal savior, और अगर गैर अक़वाम यीशु मसीह को अपने निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करते हैं they have to obey the laws that Jews obeyed before they become a believer. तो उसके लिए जरूरी है कि वो उन कवानीन को पूरा करें जो कि यहूदी कौम के लिए थे. The believing Jews, और जो ईमान रखने वाले यहूदी थे they could not get it through their heads उनके ज़हन में ये बात उन्हें समझ नहीं आ रही थी that circumcision was not necessary. ये खतना जरूरी नहीं था. They were encouraged in their wrong attitude. और इस हवाले से वो अपने गलत रवैये में ही हौसला अफजाई हासिल कर रहे थे. And this is causing contention in the church. और इस वजह से चर्च में तफरीक हो रही थी. How many times we have contention in the church? और कितनी दफा ऐसा होता है कि हम भी अपनी कलीसिया में किसी बहन भाई के साथ तफरीक करते हैं. And it's among the believers. और ये ईमानदारों के बीच में है. And here we see a scene that Sister Nomi just read. और जो अभी हमने कलाम का हिस्सा पढ़ा है It's not written, but maybe there was a potluck taking place. और यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन हो सकता है वहाँ पे कोई खाने की दावत चल रही हो. Maybe there was a prayer meeting. हो सकता है कोई दुआ या इबादत हो रही हो. And Paul enters the scene. और जब पौलुस वहाँ पे दाखिल होता है there is a segregation between believers of the church. और वो देखता है कि जो कलीसिया के ईमानदार हैं उनमें तफरीक हुई है. The Jews are on the right side.
जो यहूदी लोग हैं वो दाहिनी तरफ बैठे हैं or left, we don't know. या हो सकता है बाईं तरफ, हम नहीं जानते. And the Gentile converts, और जो गैर कौम से आए हुए मसीही थे they are on the other side. वो ईमानदार दूसरी तरफ बैठे थे. And Peter is avoiding them. और जो पतरस है वो उन He is avoiding to talk to the Gentile converts. और वो उनसे बात करने से इज्तनाब कर रहा है. Peter, पतरस the great preacher, जो कि एक अजीम खादम है, who stood up in Acts, in the book of Acts, जो हम अमाल की किताब में देखते हैं कि किस तरह से दिलेरी के साथ खुदा का कलाम लोगों को पेश किया. in chapter 2, when the Holy Spirit was poured, दूसरे बाब में जब रूह कुद्स का नज़ूल होता है and he stood up and he defended और किस कदर दिलेरी से उस वक्त उसने खुदा के कलाम का दिफा किया. the work of the Holy Spirit, और खुदावंद पाक का ये काम था. people speaking in tongues. ये लोग गैर ज़बानों में दुआ कर रहे थे. The same Peter, और वही पतरस, we see his another character हम उसके किरदार का एक मुख्तलिफ सिर्फ देखते हैं यहाँ पे, where he is a people pleaser. जहाँ पे वो लोगों को खुश कर रहा है. He is scared to lose membership of the church, और इसे ये डर है कि कहीं उसकी कलीसिया की मेंबरशिप ना कैंसिल हो जाए. and he is avoiding to talk to the Gentile converts. और इस वजह से वहाँ पे जो गैर कौम के लोग हैं जो कि मसीह में शामिल हो गए हैं उनसे बात नहीं कर रहा. And similarly, Titus is being judged. और इसी तरह जो तितस है, हाँ जी तितस, उसको भी जज किया जा रहा है Because he has not gone through circumcision. क्योंकि उसका खतना नहीं हुआ हुआ. Circumcision, खतना a physical act एक जिस्मानी हाँ जी हालत है for purification, जो कि पाक करने के लिए है. and that is what was the belief of Mosaic law. और जो मूसा की शरीयत है उसके मुताबिक ऐसा ही समझा जाता And है. if we go behind Abrahamic law, और अगर इससे पहले हम इब्राहिम के दौर में देखें, circumcision खतना is an act of holiness. पाकीज़गी का एक अमल है That this person will be circumcised and he will be pleasing to the Lord. कि अगर किसी शख्स का खतना होगा तो वो खुदा की नजर में मकबूल ठहरेगा. And there is a lot of confusion going on in the church. और यहाँ पे हम देखते हैं कि कलीसिया में बेहद कंफ्यूजन है. The biggest confusion is over circumcision of Titus. और सबसे ज्यादा कश्मकश या बहस इस बात पे हो रही है कि तितस का खतना नहीं हुआ हुआ Because he's a leader क्योंकि वो वहाँ पे एक लीडर है and people are not accepting him. और लोग उसे कबूल नहीं कर रहे. And Paul now gets very angry. और यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस रसूल इस बात से काफी खफा है. And we read in Galatians chapter 1, और इस गलीतियों के पहले खत में हम देखते हैं 6 to पहले 9. आपने सॉरी 6 to 9. 6 to 9 वर्सेस. Yes. जी, गलीतियों का खत पहला बाब और 6 से 9वीं आयत तक. So do you want me to read that? Yes, please. खुदावंद के कलाम में लिखा है, मैं तवज्जो करता हूँ कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया उससे तुम इस कदर जल्द हिट कर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल होने लगे. मगर वो दूसरी नहीं, अलबत्ता बाज ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं. लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मलाऊन हो. जैसा हम पेशतर कह चुके हैं वैसा ही अब भी मैं फिर कहता हूँ कि उस खुशखबरी के सिवा जो तुमने कबूल की थी अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाता है तो मलाऊन हो. Here Paul is talking about a gospel. और यहाँ पर पौलुस रसूल खुशखबरी की बात कर रहा है. Gospel खुशखबरी, right? Yeah. A gospel which preaches ऐसी खुशखबरी जो हमें ये सिखाती है that Jesus died for your sins. कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए हुआ And for our sins, just the blood of Jesus is more than enough. और हमारे गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु का लहू काफी है. We don't need to go through any ritual or traditions. और इसके लिए हमें किसी भी रवायत से या कोई रवायत पूरी करने की जरूरत नहीं है. We don't have much time, so we have read Numbers and Judges and all these books, Old Testament books, where we see lot of ceremonial rituals and traditional rituals.
اور جب ہم پرانے عہد نامہ میں پڑھتے ہیں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح استثنا کی کتاب میں ہمیں بے شمار ایسی رسومات کے بارے میں، روایات کے بارے میں بتایا گیا ہے جو پوری کرنی پڑتی تھی. And Paul's heart as a leader is saddened. اور یہاں پر پولس کا دل ایک لیڈر ہونے کے ناطے غم زدہ ہے. And we see the setting, the scene of the church where he stands up and confronts Peter. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ کھڑا ہو کر اس سلسلے میں جو پطرس ہے اس سے سامنا کرتا ہے، اس سے اس بات کے لیے منع کرتا ہے. Let me clarify our confusion. یہاں پہ میں غلط فہمی دور کیے دیتی ہوں. Some theologians they say that the letter of Galatians was written by Apostle Paul before the book of Acts. اور بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ جو گلیتیوں کا خط ہے وہ اعمال کی کتاب سے پہلے لکھا گیا ہے. And there is another set of theologians that they think that Acts was written before Galatians. اور کچھ دوسرے جو مورخین ہیں وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اعمال کی کتاب ہے وہ پہلے لکھی گئی ہے. Just like the book of Job, they say it's the oldest book. جس طرح ایوب کی کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے قدیم کتاب ہے. So we are not following the sequence pattern in the Bible. تو یہاں پہ ہم ترتیب کو فالو نہیں کر رہے. The discussion is still going on. بحث یہاں پر جاری ہے. So but that doesn't matter. لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا. Because we see in the book of Acts also. کیونکہ ہم اعمال کی کتاب میں بھی دیکھتے ہیں that there is a confrontation. کہ یہاں پہ بھی ایک بحث ہے about the Gentiles becoming Christians. کہ کس طرح سے جو غیر قوم کے لوگ ہیں وہ مسیح میں شامل ہو رہے ہیں. And how they are being welcomed by the judgmental Jewish converted Christians. اور کس طرح سے وہ یہودی لوگ جو کہ اب مسیح میں شامل ہو گئے تھے لیکن کس طرح سے وہ ان کو خوش آمدید کرتے ہوئے بھی ان پر تنقید کر رہے تھے. So there is a relationship between Galatians chapter 2 اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گلتیوں کی جو خط ہے اس کے دوسرے باب میں and the council at Jerusalem in Acts chapter 15. اور اعمال 15 باب میں جو کاؤنسل ہے ان کا آپس میں ایک رشتہ ہے. If we can read some of it. Sure. 15. Yes, Acts chapter 15. اعمال کی کتاب اس کا 15 باب First 5 verses. اور اس کی پہلی 5 آیات. اعمال کی کتاب 15 باب اور اس کی پہلی 5 آیات. خدا کے کلام میں لکھا ہے پھر بعض لوگ یہودیہ سے آ کر بھائیوں کو تعلیم دینے لگے کہ اگر موسیٰ کی رسم کے موافق تمہارا ختنہ نہ ہو تو تم نجات نہیں پا سکتے. بس جب پولس اور برناباس کی ان سے بہت تکرار اور بحث ہوئی تو کلیسیا نے یہ ٹھہرایا کہ پولس اور برناباس اور ان میں سے چند اور شخص اس مسئلہ کے لیے رسولوں اور بزرگوں کے پاس یروشلم جائیں. بس کلیسیا نے ان کو روانہ کیا اور وہ غیر قوموں کے رجوع لانے کا بیان کرتے ہوئے فنیقے اور سامریا سے گزرے اور سب بھائیوں کو بہت خوش کرتے گئے. جب یروشلم میں پہنچے تو کلیسیا اور رسول اور بزرگ ان سے خوشی کے ساتھ ملے اور انہوں نے سب کچھ بیان کیا جو خدا نے ان کی معرفت کیا تھا. مگر فریسیوں کے فرقہ میں سے جو ایمان لائے تھے ان میں سے بعض نے اٹھ کر کہا کہ ان کا ختنہ کرانا اور ان کو موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کا حکم دینا ضرور ہے. You can read verse 6 and 7 too. آگے میں 6 اور 7 آیتیں پڑھ رہی ہوں. بس رسول اور بزرگ اس بات پر غور کرنے کے لیے جمع ہوئے اور بہت بحث کے بعد پطرس نے کھڑے ہو کر ان سے کہا کہ اے بھائیو تم جانتے ہو کہ بہت عرصہ ہوا جب خدا نے تم لوگوں میں سے مجھے چنا کہ غیر قومیں میری زبان سے خوشخبری کا کلام سن کر ایمان لائیں. This is related to what Paul is talking about. اور یہ اس کا سارا پس منظر ہے جس کے بارے میں پولس رسول بات کر رہا ہے. But now we see Peter reacting in a different manner. لیکن یہاں پہ اب ہم دیکھتے ہیں جب ہم گلیتیوں کے خط کو پڑھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو پطرس ہے اس کا رویہ یکسر مختلف ہے. In chapter 15, Peter stands up. 15 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ان لوگوں کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. And he will say that God knows the heart.
اور وہ یہاں پہ کہتا ہے کہ خدا دلوں کو جانتا ہے. He doesn't see what rituals and tradition you do every day to please God. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ روز کون سی رسوم و رواج کو پورا کر رہے ہیں تاکہ آپ خدا کو خوش کر سکیں. And this is a sickness, a disease in the church, اور یہ ایک طرح کی کلیسیا میں بیماری ہے in the body of Christ, یسوع مسیح کے بدن میں that we don't like to access the anointing of the Holy Spirit directly. کہ ہم خدا کی جو روح کا مسا ہے ڈائریکٹلی اس کا جو ہے اس کے پاس نہیں جاتے. We don't understand that we are called high priest, ہم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ہمیں شاہی کاہنوں کا فرقہ کہا گیا ہے and we have access to His throne and glory اور ہمیں یہ آزادی حاصل ہے کہ ہم اس کے تخت کے پاس کبھی بھی جا سکتے ہیں without passing through any rituals اور اس کے لیے ہمیں کوئی رسم ادا نہیں کرنے کی ضرورت or implementing any traditions in the church. یا کوئی روایات چرچ میں بنانے کی نہیں ضرورت. The thing I have on my heart today that the Holy Spirit has given me for the church today اور آج میرے دل میں جو پاک خداوند نے آپ کے لیے کلام دیا ہے is that we might have forgotten. I'm not judging anyone, but I don't know why the Lord gave me this message for the church, that we are trying to gain favor of the Lord, anointing of the Lord, not through what the Word of God says, but through certain rituals and traditions that are not aligning with God's Word. اور یہاں پہ ہم تنقید نہیں کر رہے ہیں لیکن خدا کا پاک روح یہ کہہ رہا ہے کہ بہت مرتبہ ہم اس خدا کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے سمجھتے ہیں کہ ہمیں مختلف رسموں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے بجائے اس بات کے لیے کہ خدا کا جو کام ہے ہماری زندگیوں کے لیے جو اس کا نجات کا منصوبہ ہے ہم اس پر غور کریں. Peter approved of Paul's gospel and ministry. اور جو پترس ہے وہ پولس رسول کی جو خدمت ہے اس کو قبول کرتا ہے. When Paul comes to him in Galatians chapter 2 verse 9, اور گلتیوں کے خط دوسرے باب کی 9ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب پولس رسول وہاں پہ آتا ہے تو پترس اس کو وہاں پہ خوش آمدید کہتا ہے. and we just read in Acts chapter 11 verse 1 to 18 that Peter welcomes the Gentiles and defends them. اور یہاں پہ ہم اعمال 11 باب میں یہی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پترس جو ہے وہ غیر قوموں کو خوش آمدید کر رہا ہے اور ان کی طرفداری کر رہا ہے. But now it's a sad dilemma. لیکن یہاں پہ ہم ایک دکھ کی بات دیکھتے ہیں. Peter separated himself یہاں پہ المیہ ہے کہ پترس نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا and withdrew himself. اور اپنے آپ کو لوگوں سے دور کر دیا. Though he was in agreement previously, اگرچہ وہ ماضی میں ان کے ساتھ اس چیز میں رضامند تھا welcoming Gentiles into the church کہ جو غیر اقوام ہے ان کو کلیسیا میں خوش آمدید کیا جائے and bringing them under Mosaic law, اور ان کو موسیٰ کی شریعت کے تحت اس کی شریعت میں لائق ہے. when Peter came to Antioch, جب پترس انطاکیہ میں آیا it was another story. وہ ایک مختلف کہانی ہے. And now اور اب he refuses to associate with Gentiles. وہ اپنے آپ کو جو غیر قوموں کے لوگ ہیں ان کے ساتھ منسلک کرنے سے گھبراتا ہے. This is what's happening in Antioch, اور یہ انطاکیہ میں ہوا home church, Paul's home church. جہاں پہ پولس رسول کا ہوم چرچ ہے. When Peter came to Antioch, that is Paul's home church, it's another story, and he refused to associate with Gentile Christians. اور یہ وہ کلیسیا ہے جہاں پہ پولس رسول نے اپنی خدمت کو شروع کیا اور جب پترس یہاں پہ آتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے غیر قوموں کے لوگوں کے ساتھ منسلک نہیں ہونا چاہ رہا. Peter knew that people will get offended. These Jews converted into Christian, they will get offended if I sit with the Gentiles, though they are now called sons of God. اور پترس کو یہ خوف تھا کہ وہ لوگ جو یہودی ہونے کے ناطے مسیحیت میں شامل ہوئے تھے وہ اس کے اس رویے سے اس سے ناراض ہو جائیں گے. Peter knew he is doing wrong. پترس اس بات سے واقف تھا کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ غلط ہے. He knew that God does not require the Gentile to have circumcision. وہ یہ بات جانتا تھا کہ خداوند غیر قوموں سے یہ توقع نہیں کر رہا کہ وہ بھی ختنہ کروائیں Or they have to perform sacrifices, یا وہ قربانیاں کریں or they have to do, I'm not against Sabbath day, but they have to abide to Sabbath rules. یا وہ محض جو سبت کے قوانین ہیں ان پر عمل کریں. Because some Jews, they don't even turn off the switch on a Sunday. کیونکہ بعض یہودی ایسے کہ وہ سبت والے دن ایک بٹن تک نہیں دباتے.
That is what they believe in. क्योंकि वो इस बात को मानते हैं And they believe God will be pleased by that. और वो ये मानते हैं कि इन सब चीजों और बातों से खुदा उनसे खुश होगा। Acts chapter 10 verse 10 to 16. अमाल 10 बाब Please open your Bibles to Acts chapter 10 verse 10 to 16. उसकी 10 से 16 आयत। अमाल की किताब 10वां बाब 10 से 16 आयत। Yes, please. Thank you. और खुदावंद के कलाम में लिखा है, और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, लेकिन जब लोग तैयार कर रहे थे तो उस पर बेखुदी छा गई, और उसने देखा कि आसमान खुल गया और एक चीज बड़ी चादर की माने चारों कोनों से लटकती हुई जमीन की तरफ उतर रही है, जिसमें जमीन के सब किस्म के चौपाए और कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे हैं। और उसे एक आवाज आई कि आए पतरस, उठ, ज़बा कर और खा। मगर पतरस ने कहा, आए खुदावंद, हरगिज़ नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई हराम या नापाक चीज नहीं खाई। फिर दूसरी बार उसे आवाज आई कि जिनको खुदा ने पाक ठहराया है तूने हराम ना कह। 3 बार ऐसा ही हुआ और फिर वो चीज आसमान पर उठा ली गई। आमीन। We won't read further, but we know the whole story. और हम इस वाक्य से बखूबी वाकिफ हैं That Peter saw this vision with a cloth in the air, कि जो पतरस उसने एक रोया देखी कि आसमान में एक चादर है and there is food in it, और उसमें खाना है and he's very hungry. और उसे बेहद भूख लगी हुई है, It's like a potluck. और ये किस्म से एक खाने की दावत है, It's like a buffet, एक तरह का बुफे लगा हुआ है वहाँ पर, and there's variety of food and meat and animals. और वहाँ पे मुख्तलिफ इकसाम के खाने हैं, मुख्तलिफ किस्म का गोश्त, मुख्तलिफ किस्म के जानवर, But all the things that are not permitted. लेकिन वो सब ऐसी चीजें हैं जिन्हें खाने की इजाजत नहीं है। And the voice of the Lord comes and he says that go ahead and eat it. और खुदावंद की आवाज आती है, पतरस उठ, ज़िबा कर और खा। Can you read where it says that what God has anointed holy? Verse 14. Yes. 14 आयत में लिखा है, वैसे मैं पढ़ रही हूँ। मगर पतरस ने कहा, आए खुदावंद, हरगिज़ नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई हराम या नापाक चीज नहीं खाई। फिर दूसरी बार उसे आवाज आई कि जिनको खुदा ने पाक ठहराया है तू उन्हें हराम ना कह। Hallelujah. Such a blessed assurance we have because of the shedding of the blood on the Calvary. और हमारे पास ये बरकत तस्दीक है उस लहू के वसीले से जो यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे लिए बहाया। I'm not encouraging that you should be eating all those things that we shouldn't be. हम इस बात की हौसला अफजाई नहीं कर रहे कि आपको हर चीज खानी चाहिए, We are separated. Yes, we are holy people. क्योंकि हम अलहदा किए गए हैं, हम पाक लोग हैं। But this vision was for a reason. लेकिन इस रोया का एक मकसद था, Because maybe Peter in his heart, क्योंकि पतरस हो सकता है अपने दिल में, when the Jew converted Christian walked in his church, कि जब उसकी कलीसिया में वो यहूदी जो मसीहत में शामिल हो गए थे, दाखिल हुए, he would be welcoming them with open arms. वो खुली बाजों के साथ उन्हें खुशामदीद कह रहा है। But when a Gentile convert Christian entered, लेकिन जब एक गैर कौम का शख्स मसीहत में दाखिल होता है, it was a faraway handshake. वो बहुत मुश्किल से उनसे हाथ भी मिलाता है, He withdrew from them. वो उनसे दूर रहता है, He did not want to go close to वो them. उनके पास नहीं जाना चाहता। And the Lord was speaking to Peter. और खुदावंद पतरस से कलाम कर रहा था। God does not see man as man sees man. और खुदावंद इंसानों को उस तौर से नहीं देखता जिस तरह से हम एक दूसरे को देखते हैं। Religion always, when we come to religion, any religion, it judges people. और जब हम मजहब की बात करते हैं, कोई भी मजहब क्यों ना हो, हर मजहब लोगों पर तनकीद करता है। Religion is the best that people can do. और मजहब एक ऐसी कोशिश है जो अपनी तरफ से लोग बेहतरीन कर सकते हैं। With religion, you want to pray 10 times a day, और हो सकता है मजहब की रसूमात के मुताबिक आप दिन में 10 मरतबा दुआ करते हो, and you feel you cannot pray without a shower. और आप ऐसा सोचते हो कि आप गुस्ल लिए बगैर या वजू किए बगैर दुआ नहीं कर सकते। Or maybe you have to look very religious, spiritual, और या आपको ज़ाहिरी तौर पर बेहद मजहबी दिखने की जरूरत है, because that's what the law requires. क्योंकि ये सब जो है शरीयत के मुताबिक था। That's what the law requires, that you have to go through certain rituals to please God. क्योंकि ये शरीयत के मुआफिक करके खुदा को खुश करने के लिए आपको कुछ रस्मों को पूरा करने की जरूरत है। And only the high priest
اور صرف جو شاہی کاہن ہے he could go in the Holy of Holies. وہ خدا کے پاک ترین مقام تک جا سکتا تھا، Ordinary man had no access. اور جو عام آدمی ہے اس کو وہاں تک رسائی حاصل نہ تھی. But praise God for the torn veil. لیکن ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس پردے کے لیے جو کہ 2 ٹکڑے کر دیا گیا. That torn veil وہ ہاں جی مقدس کا پردہ جس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، that made all of us to access the Holy of Holies. اور جس کی وجہ سے ہمیں پاک ترین مقام تک جانے کی رسائی حاصل ہو گئی. So religion is the best that people can do. اور مذہب ایک ایسی کاوش ہے جو لوگ بہترین کر سکتے ہیں With their works and with their efforts, اپنی کوششوں سے، اپنے اچھے اعمال سے، the number of times they pray. جتنی مرتبہ وہ چاہیں وہ دعا کرتے ہیں. But Christianity is the best that God can do. لیکن مسیحیت وہ کوشش ہے جو خدا نے ہمارے لیے کی. Christianity is the best that God can do for you. وہ ہمارے لیے ایک بہترین کوشش ہے جو خدا نے کی ہے. Because law deals with what we do. Law. کیونکہ قانون وہ چیز ہے جو ہم کرتے ہیں، Grace deals with what Christ has done for you. لیکن فضل یہ ہے کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا کیا. Galatians chapter 2 verse 16. گلتیوں کا خط 2 باب کی 16 آیت، Can you read it? اس میں لکھا ہے، تو بھی یہ جان کر کہ آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے، خود بھی مسیح یسوع پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہریں، نہ کہ شریعت کے اعمال سے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا. Hallelujah. Praise God. Such a blessed assurance we have today. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کس قدر بابرکت تصدیق ہے. And we're talking about the grace of God اور یہاں پر ہم خدا کے فضل کی بات کر رہے ہیں that is expanded beyond human horizons. جو انسانی سوچ اور سمجھ سے باہر ہے، اس سے بالا تر ہے. And it was not only Peter. اور یہاں پہ محض پترس ہی نہیں ہے، Barnabas also follows him. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو برناباس ہے وہ بھی اسی طور سے کر رہا ہے. Such great believers, such great leaders of the church. اور اس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے عظیم و بشری تھے، وہ چرچ میں کلیسیا میں خدمت کرتے But تھے. there is division of mind, لیکن ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں mindset. کہ ان کا جو ذہن، ان کی جو سوچ ہے، ان کا جو ذہن ہے وہ کس قدر مختلف ہے. And they are behaving, Peter and Barnabas and the other Jewish converted Christians are behaving as the Gentile converts need to go through the law. اور ان کا رویہ ان لوگوں کے ساتھ جو غیر قوم سے مسیحیت میں شامل ہوئے تھے، پترس کا، برناباس کا، جو باقی یہودی تھے، وہ یہی تھا کہ انہیں بھی شریعت کو پورا کرنا ضرور ہے. And that is why now Paul confronts Peter publicly. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پولس سب کے سامنے پترس کے ساتھ کا سامنا کرتا ہے. In verse 14, he says, but when I saw that they were not straightforward about the truth of the gospel, I said to Peter before them all, if you being a Jew live in the manner of Gentile and not as the Jew, why do you compel Gentiles to live as Jew? اور اس کا حوالہ ہم گلتیوں کے خط 2 باب کی 14 آیت میں دیکھتے ہیں. لکھا ہے، جب میں نے دیکھا کہ وہ خوشخبری کی سچائی کے موافق سیدھی چال نہیں چلتے تو میں نے سب کے سامنے کیفا سے کہا کہ جب تو باوجود یہودی ہونے کے غیر قوموں کی طرح زندگی گزارتا ہے، نہ کہ یہودیوں کی طرح، تو غیر قوموں کو یہودیوں کی طرح چلنے پر کیوں مجبور کرتا ہے؟ تو What a scene it is at the Antioch Christian potluck. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو انطاکیہ کا شہر ہے وہاں پر ایک بے حد ایک عجیب منظر ہے. The Gentile Christians have been just asked to leave, maybe. اور ہو سکتا ہے کہ جو غیر اقوام سے لوگ شامل ہوئے تھے، ہو سکتا ہے انہیں کہا گیا ہو کہ وہ وہاں سے چلے جائیں. Maybe not verbally, but by a cold attitude. ہو سکتا ہے انہیں زبانی نہ کہا گیا ہو ایسا، لیکن ان کے رویوں سے یہ ظاہر ہو کہ وہ وہاں پر پسند نہیں کیے جا رہے. If you go to somebody's house اگر آپ کسی کے گھر جائیں and you don't get a warm welcome, اور وہ آپ کو اچھے طریقے سے ویلکم نہ کریں، so then you better be intelligent to leave the house. تو آپ سمجھدار ہوں اور آپ سمجھ جائیں تو آپ جلد ان کے گھر سے چلے جائیں. They weren't allowed to share the same food with the Jewish converted Christians. اور انہیں اس بات کی بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ ان یہودی جو یہودی ہیں جو کہ مسیح میں شامل ہو چکے ہیں ان کے ساتھ کھانا کھائیں اکٹھے. Peter, who was the most prominent of all the disciples, اور جو سارے شاگرد ہیں ان میں سے سب سے زیادہ پترس جو ہے وہ سلسلے میں نظر آ رہا ہے. he was most prominent disciple.
وہ ایک बेहद जाना पहचाना शागिर्द था And at that time, he was one of the most prominent Christian. और उस वक्त में वो एक जाना पहचाना मसीही भी था. It must have been hard to know who is Paul. लेकिन ये जानना गालिबन मुश्किल था कि पौलुस रसूल कौन था. People knew Paul, लोग पौलुस को जानते थे, but they always judged him as a persecutor. लेकिन वो हमेशा उस पर इस तौर से तनकीद करते थे कि वो एक जुल्म करने वाला शख्स था. When he met Jesus, he had an encounter on the road to Damascus. और जब दमिश्क की राह पर उसका यीशु मसीह से सामना हुआ, Many of the Jerusalem believers, तो जो यरूशलेम में रहने वाले बहुत सारे ईमानदार थे, they did not trust Paul. उन्होंने पौलुस पर भरोसा नहीं किया. They did not want to meet Paul. वो उससे मिलना नहीं चाहते थे. But Paul had experienced that undescribable grace. लेकिन जो पौलुस रसूल है, उसने उसको जो उस फजल को हासिल किया था, उसका तजर्बा किया था जो बयान से बाहर है. That undeserved favor of the Lord. कि वो खुदा की Undeserved favor. जो हमें गैर मुस्लिम तौर पर हमें खुदा की तरफ से फेवर मिली है. He was a persecutor of the Christians. और वो जो कलीसिया है वो उनको कत्ल करने वाले लोगों में से शामिल था. But he experienced that grace, that mercy लेकिन उसने खुदा के फजल का, खुदा के रहम का तजर्बा किया that runs red on the Calvary, जो कि कलवरी से बहता है, that is red on the Calvary, जो कि कलवरी से हमारे लिए बहाया गया. that is the blood of Jesus. वो यीशु मसीह का खून है. God didn't choose him when he was preaching the gospel. और खुदा ने उसे उस वक्त नहीं चुना जब वो कलाम की मुनादी कर रहा था. God chose him खुदा ने उसे तब चुना when he was killing the Christians. जब वो मसीहियों को कत्ल कर रहा था. He did not earn the glory, that vision of seeing Jesus face to face, because he's a mighty preacher, a holy preacher. और उसका यीशु मसीह से सामना इसलिए नहीं हुआ कि वो कोई बहुत अजीम खादम था या उसमें कोई बहुत खास काबिलियत थी और उसने इसे अपनी काबिलियत की बेसिस पे हासिल किया. But God chose him लेकिन खुदावंद ने उसको चुना while he was killing, जबकि वो उस वक्त लोगों पर जुल्म और सितम कर रहा था. while we were sinners. जब हम गुनाहगार ही थे, Christ died for us. यीशु मसीह हमारे लिए हुआ. This is one of my favorite verses. ये मेरी पसंदीदा आयत में I love this verse. और मुझे ये आयत बेहद पसंद है. I want to cry when I read this verse. और जब मैं ये आयत पढ़ती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है. Romans chapter 5 verse 8. रोमियो का खत 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत. Yes, please. Thank रोमियो you. का खत 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत. लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ. And can you read 1 Corinthians chapter 15 and verse 10? इसके साथ हम एक दूसरा हवाला देखेंगे. पहला करंथियों का खत Chapter 15 verse 10. उसका 15वां बाब और उसकी 10वीं आयत. Please enjoy the grace of the Lord. Think about it. और जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो खुदा के फजल के बारे में सोचें, उससे लुत्फ अंदोज हो. Let's get soaked in the love of God right now. और आइए खुदा की मोहब्बत में डूब जाएं. पहला करंथियों 15 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, लेकिन जो कुछ हो खुदा के फजल से हो, और उसका फजल जो मुझ पर हुआ वो बेफायदा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन सब से ज्यादा मेहनत की और ये मेरी तरफ से नहीं हुई बल्कि खुदा के फजल से जो मुझ पर था. Hallelujah. Praise God. It is the grace of God. It's the favor of the Lord. खुदा की तारीफ और हम ये देखते हैं कि ये महज खुदा का फजल है. Lamb of God who takes away the sin of the world. खुदा का बदला जो दुनिया के गुनाह अपने ऊपर लिए जाता है. John 3:16. God so loved the world. ये मुद्दा 3:16 में लिखा है कि खुदा ने शान से ऐसी मोहब्बत रखी. Not only Jewish background. सिर्फ उन लोगों से नहीं जो कि यहूदी थे. Not only Abrahamic covenant. सिर्फ उन लोगों से नहीं जिनके साथ इब्राहिम का वादा हुआ है. And Paul is warning the Galatian believers.
اور یہاں پہ پولوس جو ہے وہ جو گلیتیوں کی کلیسیا ہے ان کو اس حوالے سے تنبیہ کر رہا ہے to hold fast to their personal liberty in Christ Jesus. کہ جو آزادی انہیں یسوع مسیح میں حاصل ہے اس کو تھامے رہیں، Because Lord demands perfect freedom, کیونکہ خدا کا کلام ہمیں مکمل آزادی بخشتا ہے، Lord demands perfect freedom, اور خدا ہمارے سے یہ ہاں جی مکمل آزادی کی توقع رکھتا ہے، and grace demands perfect submission. جبکہ جو خدا کا فضل ہے وہ ہم سے مکمل تابعہ داری کی امید رکھتا ہے۔ Galatians chapter 3 verse 13. گلیتیوں کا خط 3 باب اس کی 16 آیت، Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. اور یسوع مسیح نے ہمیں لعنت سے آزاد کیا اور ہماری خاطر خود لعنت بن گیا۔ گلیتیوں کا خط 3 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے، بس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے، وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے، بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو، اور وہ مسیح ہے۔ آمین۔ Yes, the law shows us that we need to be perfect. اور شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں کامل ہونے کی ضرورت ہے، But grace shows us that God's love is perfect. لیکن ہمیں خدا کا فضل یہ سکھاتا ہے کہ خدا کی محبت ہمارے لیے کامل ہے۔ Law teaches that we must work hard for salvation. شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں سخت محنت کرنے کی But ضرورت ہے، hallelujah, grace of Lord Jesus, لیکن جو خداوند کا فضل ہے that salvation is a free gift وہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نجات خداوند کی طرف سے ہمارے لیے ایک مفت تحفہ ہے، that we have received by faith جو کہ ہمیں ایمان لانے کی وجہ سے حاصل ہوا، because of the grace of God. کیونکہ خداوند نے ہم پر فضل کیا۔ Incident at the Antioch اور church, جو انطاکیہ کی کلیسیا کا واقعہ ہے it shows the character of Peter, وہ ہمیں پطرس کے کردار کے بارے میں بتاتا ہے، and into which we all become a prey to, we become trapped into. ہم بھی اسی طرح اسی رویے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ We like to point out, ہمیں تنقید کرنا اچھا لگتا ہے، oh yes, this lady is, she is preaching, اور بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں اچھا یہ جو بہن ہے جو منادی کر رہی ہے، but I know 15 years ago what happened in her life. لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ 15 سال پہلے ان کی زندگی میں کیا ہوا، This brother is singing in the choir. اور یہ بھائی جو کوائر میں گاتے ہیں، Yes, he has a very good voice, good vocals. ہاں جی اگرچہ ان کی آواز بہت اچھی ہے، But we know he committed a crime 10 years ago. لیکن 10 سال پہلے انہوں نے اپنی زندگی میں بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ We keep judging people not through the love, through the lenses of God's eye, اور ہم لوگوں پر تنقید کرتے رہتے ہیں اور ہم ان کو خدا کی محبت کی نظر سے نہیں دیکھتے but the lens of law. بلکہ شریعت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ The vision that God showed to Peter, اور خدا نے پطرس کو جو رویا دکھائی there was a purpose behind it. اس کے پیچھے ایک مقصد تھا، God wanted to tell him خدا اسے یہ بتانا چاہتا تھا that what God has bought through his precious blood, کہ جو یسوع مسیح نے اپنے قیمتی خون سے خرید لیا ہے no man can blame it, اس پر کوئی آدمی تنقید نہیں کر سکتا، because he took all the blame for us. کیونکہ سارے الزام یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لیے، He became the unblemished Lamb of God. اور وہ خدا کا برہ بن گیا، ایسا برہ جو کہ گناہ سے واقف نہ تھا، اس نے ہمارے گناہ اپنے اوپر لے لیے۔ Paul exhorts the believers اور یہاں پہ پولس ایمانداروں سے کہتا ہے that justification and sanctification کہ طرفداری اور پاکیزگی is by faith صرف ایمان سے حاصل ہوتی ہے and not by works. اور اچھے کاموں سے نہیں۔ Peter was very precious for Jesus, remember? اور ہم جانتے ہیں کہ جو پطرس ہے وہ یسوع مسیح کا ایک بہت قیمتی شاگرد ہے، And he's a great preacher. اور وہ ایک عظیم خادم ہے منادی کرنے کے حوالے سے۔ And when the outpouring of Holy Spirit takes place in Acts chapter 2, اور جب اعمال 2 باب میں اس پر پاکوں کا نزول ہوتا ہے he became very famous وہ بہت مشہور ہو گیا، because he stood up and defended کیونکہ اسے دلیری کے ساتھ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر یسوع مسیح کا دفاع کیا، the accusation that was made against people speaking in the tongues. اور اس نے ان لوگوں کو اس حوالے سے سمجھایا کہ جو لوگ غیر زبانوں میں دعا کر رہے تھے، ان پر جو لوگ تنقید کر رہے تھے، اس نے ان کے لیے اس کی وضاحت کی۔ They thought they were drunk, انہیں ایسے لگا کہ شاید وہ لوگ جو ہے نشے میں ہیں، but Peter stood up and defended.
लेकिन पौलुस ने पतरस ने खड़े होकर उनका दिफा किया। Not only defended his brethren, उसने ना सिर्फ अपने भाइयों का दिफा किया, but exalted the work of the Holy Spirit. बल्कि उसने जो पापों का काम है उसकी बड़ाई की। But here we see another characteristic of Peter. लेकिन यहाँ पे हम उसके किरदार का एक दूसरा अक्स देख रहे हैं। And Barnabas, और जो बरनबास है, his name means son of encouragement. उसके नाम का मतलब है हौसला अफजाई का बेटा, He's from the Levite, और वो लावियों में से है, but he's not encouraging. लेकिन वो यहाँ पे कोई हौसला अफजाई नहीं कर He's रहा, scared. वो डरा हुआ है। He's scared of opinion of the people. वो लोगों का जो राय है उसके हवाले से वो उससे खौफजदा है। And sad thing is और अफसोस की बात ये है that this is not taking place in a public area. कि ये एक किसी आम लोगों की जगह पे नहीं पेश आ रहा वाकया, It is happening inside the church. बल्कि ये एक चर्च के अंदर, एक कलीसिया के अंदर हो रहा है। Those Gentiles are not sinners anymore, वो गैर कौम के लोग जो अब गुनाहगार ना थे, whom Christ set free, जिन्हें यीशु मसीह ने आजाद कर दिया था, is free indeed, जिसे यीशु आजाद करता वो यकीनन आजाद है, but they were judging them. लेकिन वो उन पर तनकीद कर रहे थे। Ephesians chapter 2 verse 18 to 20. इफ्सियों का खत दूसरा बाब उसकी 18 से 20 आयत। Yes, please. Thank you. इफ्सियों का खत दूसरा बाब 18 से 20 आयत खुदावंद के कलाम में लिखा है, क्योंकि उसी के वसीला से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए, और रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, तामीर किए गए हो। आमीन। Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Such a blessed assurance we have. और ये बेहद बाबरकत तस्दीक है हमारे लिए। I'm not getting hallelujah from you all. हमें आपकी तरफ से हालेलुया की आवाज नहीं आ रही। Praise God. खुदा की तरफ से हालेलुया। Praise God for His saving grace. खुदावन के फजल के लिए हम शुक्र करते हैं जो हमें बचाता है। His saving grace. उसका वो फजल जो हमें बचाता है, His amazing grace. उसका बयान से बाहर फजल, His expanded grace उसका फजल जो हम समझ नहीं सकते, saves you and me. हमें बचाता है। Do you remember? There's a question for you all. Do you remember any man of God, a prophet, who was being judgmental about some sinners whom God wanted to save? It's a quiz. और आपसे सवाल है कि क्या आप किसी ऐसे शख्स या किसी ऐसे नबी को जानते हैं जो कि कुछ लोगों पर तनकीद कर रहा होता है कि वो गुनाहगार हैं, हालांकि खुदा की मर्जी ये थी कि उन्हें बचा ले। Anyone? Praise God. Very good. Very good. Jonah. यूना नबी, Jonah was sent by God. और खुदा ने यूना को भेजा था। The word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai. अमित्या के बेटे यूना के पास खुदा का कलाम नाज़िल हुआ, And God said, arise and go to Nineveh. और खुदा ने उसे कहा कि उठ और नैनवा को जा, Go to the city and cry against it. और वहां पर जाकर लोगों में खुदा की मुनादी कर, कलाम की तौबा की मुनादी कर, For their wickedness. ताकि वो अपनी बदकारी से बाज आए। God was angry at the people of Nineveh. और खुदा उन लोगों पर गुस्सा था, And Jonah was expecting the fire to fall upon them. और यूना ये उम्मीद कर रहा था कि खुदा की आग उन पर नाजिल होगी, But we see a contrary result. लेकिन उसके बरअक्स हम कुछ और देखते हैं। God's mercy, खुदावन का रहम, God's favor, खुदा की तरफदारी, God's forgiveness, खुदा की मुआफी, God's second chance. खुदा का दूसरा मौका देना। God is a God of second chance. खुदावन एक ऐसा खुदा है जो हमें कई मौके देता है। To cut the story short, और बात को मुख्तसर करते हुए chapter 3 verse 10. Jonah chapter 3 verse 10. यूना की किताब उसका तीसरा बाब और उसकी 10वीं आयत। And God saw their works, that they turned away from their evil way, and God repented of the evil, and He had said that He would do unto them, and He did it not. Sorry, it's a little bit old English pattern. Yeah. यूना की किताब तीसरा बाब 10वीं आयत में लिखा है, जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रविश से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाजिल करने को कहा था बाज आया और उसे नाजिल ना किया। This is God's lens. और हम ये देखते हैं कि खुदा की नजर है।
of grace and mercy. रहम और फजल की नजर. And then we see Jonah is very angry, he's very displeased. लेकिन हम अगली आयत में देखते हैं कि लेकिन यूना इससे नहायत नाखुश और नाराज हुआ. And then when he sits under, in the old Bible language it says gourd, chapter 4 verse 9. और जब हम देखते हैं कि जब वो बेल के साया में बैठा हुआ था, Verse 9, chapter 4 verse 9. चौथे बाब की 9वीं आयत में लिखता है और 10वीं आयत में, और खुदा ने यूना से फरमाया, क्या तू इस बेल के सबब से ऐसा नाराज है? उसने कहा, मैं यहाँ तक नाराज हूँ कि मरना चाहता हूँ. तब खुदा ने फरमाया कि तुझे इस बेल का इतना ख्याल है जिसके लिए तूने कुछ मेहनत की और ना ही उसे उगाया, जो एक ही रात में उगी और एक ही रात में सूख गई. और क्या मुझे लाजिम ना था कि मैं इतने बड़े शहर नैनवा का ख्याल करूं जिसमें 1,20,000 से ज्यादा ऐसे हैं जो अपने दाहिने और बाएं हाथ में इम्तियाज नहीं कर सकते और बेशुमार मवेशी हैं. आमीन. This is the heart of God, और ये खुदा का दिल है out of which grace pours out. जिसमें से हम देखते हैं कि किस तरह से उसका फजल हम पर नाजिल होता है. And if we are chosen by God, और जब हम खुदा के चुने हुए लोग हैं, if we are called his daughters and sons, जब हम उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं, the question is today तो आज ये सवाल है that I want to throw in front of all of you. जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं. Do you have the grace of God in your heart? कि क्या आपके दिल में खुदा का फजल मौजूद है? Or are you judging your brother like Peter and Barnabas? या क्या आप पतरस की तरह दिल में अपने बहन भाइयों पर तनकीद कर रहे हैं, उनको जज कर रहे हैं? Or are you being like those Jewish converted people या आप उन यहूदी लोगों की तरह सोचते हैं या आपका रवैया उनकी तरह होता है, उन यहूदियों की तरह जो मसीह में शामिल तो हो गए थे, who are self-righteous? जो कि अपनी तरफ से खुद रासबाज थे? Such a sad dilemma. एक बेहद गमगीन अलमिया. We all fall into this trap. और हम में से अक्सर लोग इस किस्म के रवैये का शिकार हो जाते हैं. Colossians chapter 2 verse 11 to 14. कुलसियों का खत दूसरा बाब में हमने जो लिखा है इसमें. Yes, 11 to 14. Thank you, Sister Nomi, such a blessing for me. Thank you. कुलसियों का खत उसका दूसरा बाब Verse 11 to 14. उसकी 11 से 14 आया. कुलसियों का खत दूसरा बाब 11 से 14. उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, यानी मसीह का खतना जिससे जिस्मानी बदन उतारा जाता है, और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए और उसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जलाया उसके साथ जी भी उठे. Hallelujah. और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरवारों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर मुआफ किए और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी और उसको सलीब पर कीलों से जड़ कर सामने से हटा दी. Praise God. I don't have to say much after this verse. और इस आयत के बाद मुझे मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है. That all the iniquities, all the sin, all the shame कि वो सारी बदकारी, वो सारा गुनाह, वो जो सारी शर्म थी that was hung on the Calvary, जो कि कलवरी पर लटका दी गई, not only for me, ना सिर्फ मेरे लिए but for my brother बल्कि मेरे भाई के लिए, and my sister, मेरी बहन के लिए, whom I am judging every day, जिन पर मैं रोजाना तनकीद कर रही हूँ where they come from, कि वो कहाँ से आए हैं, what kind of family background they उनका have. खानदानी पस मंजर क्या है. Maybe their father never went to church, हो सकता है उनके वालिद कभी चर्च न गए हो, their mother went to different places and not the church. और हो सकता है उनकी वालदा मुख्तलिफ जगहों पे जाती रही हो सिवाय चर्च के. Maybe she went to other religious places. हो सकता है वो दूसरी मजहबी जगहों पे जाती रही हो. We look at people और हम लोगों पर इस तौर से नजर करते हैं with the eyes of the Jewish converted brethren in Galatia. जिस तौर से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो यहूदी भाई बहन जो कि मसीह की कलीसिया में शामिल तो हो गए थे लेकिन उसके बावजूद वो लोगों में तफरीक कर रहे थे. Where are we standing today? आज हम कहाँ पर खड़े हैं? Are we like Paul, क्या हम पौलुस की तरह हैं who defends his brother Titus जो अपने भाई तीतस का दिफा कर रहा है and who defends all the other Gentile believers? और जो दूसरे गैर अक़वाम से आए हुए ईमानदार हैं वो उनका दिफा कर रहा है? Or are we like Peter and Barnabas? या हम पतरस और बरनबास की तरह हैं? We are scared. हम डरते हैं If I stand with this girl, कि अगर मैं इस लड़की के साथ खड़ी हुई, she doesn't have a good history.
اس کی ایک اچھی شہرت نہیں ہے, a good character. اس کا ایک اچھا کردار نہیں ہے. Although my sister has taken water baptism, اگرچہ میری بہن نے پانی کا بپتسمہ لے لیا ہے, she is born again, وہ نجات یافتہ ہے, she is washed by the blood of Jesus, وہ یسوع کے لہو سے دھل چکی ہے, then who am I to judge? پھر میں کون ہوتی ہوں اس پر تنقید کرنے کے لیے. And we see for Peter judging, in spite of the fact he knew that these Gentiles have been called and chosen by God. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ پطرس اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ خدا نے غیر اقوام کو بلایا ہے اور ان کو پاک کیا ہے, لیکن پھر بھی ان سے دور رہ رہا ہے. Where are we standing today? آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ Are we being like Jonah? یا آج ہم یونا کی طرح ہیں؟ He said for the plant tree that he didn't plant it, وہ اس بیل کے لیے تو غمزدہ ہے جو اس نے اگائی نہیں, that vine. وہ بیل. Or are we being like Paul, یا ہم پولس کی طرح ہیں who stands fast جو بہادری سے دلیری سے کھڑا ہے and firm اور اپنی بات پہ قائم ہے and confronts Peter? اور پطرس کا اس حوالے سے سامنا کرتا ہے سب کے سامنے. You know, it's the same Paul who said آپ جانتے ہیں کہ یہ وہی پولس ہے in Corinthians, جس نے کرنتھیوں میں کہا there was sin going on in the church. کہ کلیسیا میں گناہ ہو رہا تھا, A man was living with his stepmom in a bad relationship, اور ایک شخص اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ ایک اچھے رشتے میں نہیں تھا, and Paul had warned them that talk to him. اور پولس نے اس حوالے سے کلیسیا کو انتباہ کیا تھا کہ مجھ سے بات کریں, And Paul had given a pattern how to talk. اور اس کے لیے پولس نے ایک مخصوص طریقہ بتایا جس کے ذریعے ان کو بات کرنی چاہیے تھی, 2 or 3 brothers go together and talk to the person who is in sin. جس کے مطابق 2 یا 3 ایماندار بھائی اکٹھے جائیں اور اس شخص سے بات کریں جو گناہ کر رہا ہے. Anything contrary to God's word. Anything contrary to God's اور کوئی word. بھی ایسی حرکت کر رہا ہے جو کہ خدا کے کلام کے برعکس ہے, It is a false teaching. اور یہ پولس سکھا رہے ہیں یہاں پر. And addressing someone who is living a immoral life, اور ایک ایسے شخص سے بات کرنا جو کہ ایک گناہگار کے طور پر زندگی بسر کر رہا ہے, and then addressing someone who is judging his brother, اور اس کے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایسے شخص کو سمجھا رہا ہے جو اپنے بھائی پہ تنقید کر رہا ہے, is the same category. وہ ایک ہی طرح کی کیٹیگری ہے. There's no difference. اس میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ ایک ہی طرح کے گناہ ہیں, Both things have to be dealt. اور دونوں گناہ جو ہیں ان کو نکالنے کی ضرورت ہے, ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. In Galatians chapter 1, we don't have much time. In Galatians chapter 1, اور گلتیوں کے خط میں پہلے باب میں Paul had spoken. پولس نے اس حوالے سے بات کی ہے. He said that even if an angel comes and preaches a gospel وہ کہتا ہے کہ اگر فرشتہ بھی آ کر تمہیں منادی کرے that is different from the gospel of Lord Jesus Christ, اور وہ تمہیں ایسی خوشخبری سنائے جو کہ یسوع مسیح کی خوشخبری سے مختلف ہے, don't accept it. اسے قبول نہ کرو. And why are Peter and Barnabas practicing something that is forbidden in God's word? اور پطرس اور برناباس اس کے برعکس وہی چیز کریں جس کی خدا کے کلام میں ممانعت ہے. God never said that Gentiles can never enter into my kingdom. اور خدا نے یہ کبھی نہیں کہا کہ جو غیر قوم ہے وہ میری بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتی یا اس میں شامل نہیں ہو سکتی. God loved the whole world. خدا نے ساری جہان سے محبت رکھی ہے. And later we see Peter apologizes to what happened in Antioch. اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس اس واقعے کے اوپر جو کہ انطاکیہ میں ہوا معافی مانگتا ہے. Paul as a leader, پولس ایک لیڈر ہے as a leader, اور ایک رہنما کے طور پر didn't get scared to talk to Peter, to confront him. اس نے پطرس کا سامنا کرنے سے وہ گھبرایا نہیں, وہ ڈرا نہیں, Because Paul knew کیونکہ پولس جانتا تھا your word has to be yes for yes کہ آپ کا جو کلام ہے وہ ہاں کی صورت میں ہاں ہونا چاہیے and no for no. اور نہ کی صورت میں نہ ہونا چاہیے. No matter how many members leave the church, اس بات سے قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنے لوگ کلیسیا چھوڑ کر چلے جائیں. all the converted Jews could leave the church. اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ سارے یہودی جو کہ کلیسیا میں شامل ہوئے تھے وہ کلیسیا چھوڑ کر چلے جاتے. And Peter and Paul's friendship could be broken. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پولس اور جو پطرس ہے ان کی دوستی ختم ہو جاتی. But Paul confronts boldly. لیکن ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پولس نے دلیری کے ساتھ پطرس کا سامنا کیا. He confronts Peter boldly. وہ دلیری سے اس کا سامنا کرتا ہے.
And what is the result? और उसका नतीजा क्या निकलता है? There are many verses, we can read few. 1 Peter chapter 1 verse 10. और इसके लिए हम जो हवाला देखेंगे वो है पहला पत्रस का खत, Chapter 1 verse 10. पहला पत्रस का खत पहला बाब और उसकी 10वीं आयत। और इसमें लिखा है, इसी निजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत की। Hallelujah. The grace, उस फजल के बारे में they searched that grace. उन्होंने इस फजल की तलाश और तहकीक की। Chapter 4 verse 10. 1 Peter chapter 4 verse 10. पहले पत्रस चौथे से चैप्टर खत है, पहला पत्रस चौथा बाब और उसकी 10वीं आयत। और उसमें लिखा है, जिनको जिस कदर नेमत मिली है वो उसे खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्व करे। Chapter 5 verse 10. 5वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। We see Peter's letter replete with grace of God. The word grace is repeated again and again. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पत्रस का खत है उसके हमने मुख्तलिफ जो आयात पढ़ी हैं उसमें बार बार खुदा के फजल का जिक्र किया जा रहा है। 2 Peter दूसरा पत्रस का खत chapter 3 verse 18. तीसरा बाब और उसकी 18 आयत। And this sentence becomes kind of a universal wish. और ये जो आयत है ये एक तरह की पूरी दुनिया में एक विश बन गई है, एक आयत है जो A prayer. It's like a prayer, a blessing that Peter wrote. एक बरकत और एक दुआ बन गई है जो लोग एक दूसरे के लिए कहते हैं। और इसमें लिखा है, बल्कि हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह के फजल और इरफान में बढ़ते जाओ, उसी की तमजीद अब भी हो और अब तक होती रहे, आमीन। Peter repeats the word grace. और हम देखते हैं कि बारहा यहाँ पर फजल का जो लफ्ज है वो दोहराया जा रहा है। He learned the lesson from Paul. हम देखते हैं कि उसने पौलुस से सबक सीख लिया। Paul acted as a brave leader. और पौलुस ने एक दलेर रहनुमा के तौर पर अपना रवैया रखा, Because the spirit that dwells in us, क्योंकि जो खुदा का पाक रूह हमारे अंदर बसता है it doesn't allow us to use sugar-coated words वो हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम लोगों को मीठे लफ्जों में तंबीह करें and try to make everyone happy. और ये कोशिश करें कि हमसे हर शख्स खुश रहे। If you see your brother or sister doing something contrary to God's word, और अगर आप ऐसा देखें कि आपका भाई या बहन कोई ऐसी हरकत कर रहा है जो कि खुदा के कलाम के खिलाफ है, don't be scared to lose your friend. तो इस बात से खौफजदा ना हो कि आपका रिश्ता मुतासिर होगा या आपकी दोस्ती खत्म हो जाएगी। Address them there and then. जरूरी है कि आप उसी वक्त उनको इस हवाले से बताएं। And I have experienced it in my life. और इसका मैंने अपनी जिंदगी में तजर्बा किया है। I was told right away what was wrong. I'm blessed to have such parents. और मेरे वालिदैन ने जब भी मुझसे कोई गलती हुई या कोई ऐसी हरकत हुई जो कि खुदा के कलाम के मुआफिक नहीं थी, तो उन्होंने मुझे फौरन उसी वक्त तंबीह की। Davis Bhai would guide me. Don't do this, do that. और डेविस भाई भी मुझे सिलसिले में बताते रहे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। When we were in the youth. जब हम यूथ में थे। And then Anita Baji and Josephine Baji, my spiritual mentors. और अनीता बाजी और जोसफिन बाजी मेरी रूहानी गाइड, मेरे रूहानी रहनुमा। All the times that I had spent with them. मैंने उनके साथ जितना भी वक्त गुजारा, 5-day camps. 5 दिन का कैंप होता था। We were taught. मुझे सिखाया जाता था, We हमें were सिखाया told. जाता था, We were told हमें बताया जाता था what to do, कि हमें क्या करना चाहिए, what is right, what is wrong. कि खुदा के कलाम के मुताबिक क्या सही है और क्या गलत है। And if Paul had not withstood that day bravely, और अगर उस दिन पौलुस दलेरी के साथ पतरस का सामना ना करता, if he wasn't firm that day, अगर वो उस दिन अपनी बात उस तक ना पहुंचाता, a heretical teaching would have taken place. और अगर उस सख्ती से उसे बात ना समझाता तो गालिबन एक नई रवायत जो है उस कलीसिया में जन्म ले लेती। A new religion would have taken place. शायद उस दिन कोई नया मजहब वहाँ पे पैदा हो जाता। That anybody who doesn't come from a Jewish background, और वो ये होता कि हर वो शख्स जो एक यहूदी पस मंजर से नहीं है, who is not an Israelite, जो एक
इसराइली नहीं है, who has not gone through Abrahamic covenant जिसने इब्राहिम के जो कानून है, जो शरीयत उसको पूरा नहीं किया, or Mosaic law, या मूसा की शरीयत पर अमल नहीं किया, he cannot become a born again believer. वो एक नजात याफ्ता ईमानदार नहीं बन सकता. Just one confrontation with Peter. महज एक बहस कह ले या तकरार कह ले जो सामना उसने किया पौलुस ने पतरस के साथ, A direct confrontation with Peter. और वो बिल्कुल दुरुस्त वक्त पर की गई. It elaborated, और उसने इस बात की वजाहत की, it highlighted उसने इस बात को हाईलाइट किया that grace of Lord Jesus Christ कि जो यीशु मसीह का फजल है is sufficient for you and me. वो हमारे लिए काफी है, वो मेरे लिए और आपके लिए काफी है. Anyone come into the family of God, और कोई भी शख्स है वो खुदा के खानदान में शामिल हो सकता है, no matter what their religion is, और इस बात से कतई कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका क्या मजहब है, no matter what their background is, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस बैकग्राउंड के पास मंदिर से आ रहे हैं, no matter what their criminal check is, और इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे पहले माजी में वो क्या गुनाह करते रहे हैं. Ephesians chapter, this is the last verse. I love, because without God's word, my speech is vain. It's like nothing. So I need to depend. It is my crutch. I can't walk without it. So I put lot of verses. Ephesians chapter 4 verse 14. इख्तिताम भी हम खुदा के कलाम से करेंगे क्योंकि हमारी बातें मानी नहीं रखती लेकिन खुदा का कलाम मानी रखता है, इसलिए जरूरी है कि हम इख्तिताम भी इस तौर से करेंगे. इफ्सियों का खत चौथा बाब. Sister Nomi, before that, Sister 14, before we read the verse, उसकी 14 आयत है, लेकिन इससे पहले कि हम कलाम पढ़ें, we were distributing Bibles in our park. Now it is not allowed in Canada. एक दफा का जिक्र है कि हम कनाडा में मुख्तलिफ पार्ट्स में बाइबल्स बांट रहे थे, अब इस बात की इजाजत नहीं रही है, एक पुरानी बात है. And I made some new friends. और मैंने कुछ नए दोस्त बनाए, And then I joined their Bible study group too. और मैंने उनके साथ बाइबल स्टडी भी ज्वाइन कर ली, And I went to their house, और मैं उनके घर गई, and then they would stand up और वहाँ पे वो खड़े हो जाते and they would say, "Come, और वो कहते कि आओ come and hug." आओ गले मिले. Those ladies, it's a woman group, और वो सारी खवातीन हैं और वो खवातीन आपस में एक दूसरे के गले मिलती get the anointing from me. और वो कहती कि मेरे से खुदावंद का मसा लो. And they seemed such loving women. और वो बेहद दिल आवेज खवातीन थी, The food they were serving me was so delicious. और वो जो खाना मुझे खिलाती थी वो भी बेहद मजेदार होता था. And I knew if I say something, और मैं ये जानती थी कि अगर मैं कुछ कहूँगी I'm not going to get this buffet anymore. तो मुझे ये खाना मजीद नहीं मिलेगा. But the Holy Spirit, लेकिन जो खुदा का पाक रूह है it gives you boldness. वो आपको दिलेरी बख्शता है, It gives you courage वो आपको हिम्मत देता है to speak the truth. कि आप सच्चाई बोलें. And I told that lady, और मैंने उस खातून को बताया, I won't take the name, मैं नाम नहीं लूंगी, and I said, "Sister, और मैं so and so, फलानी बहन, I get my anointing मुझे मेरा मसा मिलता है from the Holy Spirit. पाक रूह खुदावंद से. You are mortal. आप पानी हैं You need anointing from the Holy Spirit. और आपको भी पाक रूह से ही मसा हासिल करने की जरूरत है, And I don't need my anointing from you. और मुझे अपना मसा आपसे लेने की जरूरत नहीं है. And I think I needed another experience, one more experience. और मुझे लगता है मुझे मजीद एक तजर्बे की जरूरत थी. I joined another prayer group, मैंने एक दूसरा प्रेयर ग्रुप ज्वाइन कर लिया, and it was like a 1.5 hour drive to another city all by myself. और वो जगह बहुत दूर थी और मुझे अपने घर से वहां तक पहुंचने के लिए 1.5 घंटे के लिए गाड़ी चलानी पड़ती On थी. snowy road, my car is going up and down, slipping, and I'm और scared. रास्ता हम वारना था क्योंकि अक्सर वहाँ पे बर्फ पड़ी होती. Very excited, I found new sisters in Christ. ताहम मैं बेहद खुश थी कि मुझे मसीह में नई बहनें मिली हैं. And when I went there, और जब मैं वहां पर गई it was a false teaching. तो वो गलत मुनादी कर रहे थे. They were talking about some rituals, वो कुछ रसूमात की बात कर रहे थे that you have to collect mud from the ground, कि आपको जमीन से मिट्टी लेने की जरूरत है and then you have to speak this certain psalm over it, और उसके ऊपर एक मखसूस जबूर पढ़ने की जरूरत है and you have to make it wet.
और फिर आपको उसे गीला करने की जरूरत है, And then you have to put it all over the post of your doorpost of the house. और फिर आपको अपने घर में जहाँ जहाँ घर में आपके दरवाजे हैं उनकी चौखटों पे लगाने की जरूरत है। And when they held their hands, और जब उन्होंने आपस में हाथ थामे, yes, the Lord gives visions. और हाँ जी खुदावंद हमें रोया बख्शता है, At some time we all had vision and we will be having visions. हम में से हर शख्स ने कभी ना कोई रोया देखी है और आगे भी देखते But रहेंगे। the Lord gave me discernment और खुदावंद ने मुझे हिम्मत बख्शी that they were prophesying false visions. कि वो गलत रोया और नबूवत कर रहे हैं, They were just making it up. वो खुद से वो बातें बना रही थी। And there again, और फिर से I lose a group of friends. मैंने जो नए दोस्त बनाए थे उनको खो दिया, I told them, और मैंने उन्हें बताया Sister so and so, कि फलानी बहन your word, the word you are preaching, कि वो कलाम जिसकी आप मुनादी कर रही हैं does not align with what the Lord says in the word of God. वो खुदावंद के कलाम से मुताबिकत नहीं रखता, It's not aligning with the gospel of Jesus Christ. वो खुदा की जो खुशखबरी है, कलाम की जो खुशखबरी है वो उसके मुआफिक नहीं है। Even if an angel comes and preaches to you, और अगर एक फरिश्ता भी आकर आपको वो खुशखबरी सुनाता है that doesn't align with the word of God, जो खुदा के पाक कलाम के मुआफिक नहीं है, you have to forbid it. तो आपको उसे छोड़ देने की जरूरत है, You have to withstand it. आपको उसके खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। And lately, और पिछले दिनों में another experience. एक और वाकया है, एक और तजर्बा है, This is a woman of a ladies group. और ये खातून भी लेडीज ग्रुप में का हिस्सा थी। So the challenge that we are going through right now, me and my husband, और जो मुश्किल इस वक्त मुझे और मेरे शोहर को पेश है the real estate market is down. कि कनाडा में जो रियल एस्टेट मार्केट है फिर वक्त वो अच्छा काम नहीं कर रही, It's a flat line, और उसमें मजीद कोई प्रोग्रेस तरक्की नहीं हो रही, and the houses are not getting sold. और जो घर हैं वो बिक नहीं रहे। So the sister told me तो इस बहन ने मुझे बताया to do certain ritual कि कोई तावीज़ वगैरह पढ़ो, through the Bible. She's using God's word. और बाइबल में से ही मुख्तलिफ आयतें बता रही थी। You know how Satan uses God's word आप sometimes. जानते थे कि इसका बाज़ जो शैतान है वो भी खुदा का कलाम इस्तेमाल करता है, And she's like, at this time only, और वो कह रही थी ये मखसूस कलाम का हिस्सा मखसूस वक्त पर ही पढ़ो, you and your husband have to stand out और तुम्हें और तुम्हारे शोहर को इस बात के लिए खड़े होने की जरूरत है, and walk this many steps, और इतने कदम चलने की जरूरत है, and then more steps on towards the backwards. और फिर इतने कदम आगे की तरफ फिर उतने ही कदम पीछे की तरफ चलने की जरूरत है। Something that doesn't align with the gospel of Jesus Christ. एक ऐसी बात जो कि खुदा के कलाम से मेल नहीं खाती, The gospel of Jesus Christ जो यीशु मसीह की खुशखबरी है, is a gospel of grace and favor. ये खुदा के रहम और फजल का कलाम है। It doesn't need circumcision. इसको खतने की जरूरत नहीं है, It doesn't need rituals. इसे किसी रस्म की या रवायत की जरूरत नहीं, It doesn't need any traditions. इसे कोई भी रवायत नहीं जरूरी, It needs submission. इसके लिए जरूरी है कि हम अपने आप को खुदा के ताबे करें, It needs sanctification. इसके लिए खुदा को इजाजत दे कि हमें पाक करे। It needs a holiness in your life. वो ये चाहता है कि हमारी जिंदगी में पाकीज़गी हो, And we are in the times और हम ऐसे वक्त में हैं that we believers are facing lots of challenges. कि हम में से बहुत सारे ईमानदार बहुत सारी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। As you all know, my dad had a fall. आप जानते हैं कि पास्टर समी उन्हें जो गुज़श्ता दिनों में गिर पड़े, And this is too painful for me. और ये मेरे लिए बेहद दुख की बात है, It was very painful to come without him today. और आज उनके बगैर यहाँ पर आना मेरे लिए बेहद तकलीफ दे है, And I did not know. I was asking Lord, give me strength to preach today. और मैं ये भी नहीं जानती थी कि आज मैं आपके साथ खुदा का कलाम शेयर कर सकूंगी कि नहीं, और मैंने खुदा से कहा कि मुझे कुव्वत दे, But I thank my heavenly Father और मैं अपने इस्माइली बाप का शुक्र करती हूँ that His grace is sufficient for me. कि उसका फजल मेरे लिए काफी है, His grace is expanded कि उसका फजल बयान से बाहर है, beyond the human thinking, इंसानी सोच से बाला कर, beyond all the horizons, और पूरी दुनिया कायनात से बढ़कर what man can imagine or think. जिसके बारे में हम सोचते हैं। Today, और आज be like Paul. हम पौलुस की तरह Confront your brothers उन बहन भाइयों का सामना करें who are being tossed by wrong teaching. जो कि गलत तालीमात का शिकार हो गए हैं। Ephesians verse और इफ्सियों का 4 बाब और उसकी
14 Yes. में लिखा है, ताकि हम आगे को बचे ना रहें और आदमियों की बाज़गरी और मकारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरें, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ पैबस्ता होकर हर तरह से बढ़ते जाएं। Don't get swayed like the wind turns you around here and there. Don't go away with other teachings. और जिसका लिखा है कि दूसरी जो तालीमात हैं उनके साथ साथ मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरें। Stand firm on God's word. जो खुदा का कलाम है उस पर मजबूती से कायम रहें। Trust those preachers, उन लोगों पर भरोसा करें, उन मुबश्शिरीन पर भरोसा करें those who don't add a dot or a comma into God's word. जो खुदा के कलाम में किसी किस्म की मिलावट नहीं करते। Don't rush to get your desires fulfilled and don't try wrong means. उन खातमीन के पीछे ना भागें जो आपकी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं, चाहे उनका तरीकाकार गलत ही क्यों ना हो। If you don't have a child yet, अगर अभी आपके पास औलाद नहीं है don't go to wrong places. तो ऐसी जगहों पे ना, गलत जगहों पे ना जाएंगे वहां से आपको औलाद मिले। Don't go to perform wrong rituals. और किसी किस्म की भी गलत रवायात या रस्मों का हिस्सा ना बने। If you don't have a job, अगर आपके पास रोजगार नहीं है don't be swayed by wrong traditions. तो गलत रसूमात में बहकर उनको इस तरह से ना अडाप्ट करें कि आप उनका हिस्सा बने That you will get a job by giving a bribe. कि गालिबन रिश्वत देने से आपको जॉब मिल जाएगी। Stand firm like Paul. पौलुस की तरह खुदावन के कलाम में साबित कदमी के साथ खड़े रहें, Stand on the truth. सच्चाई पर कायम रहें Stand on the truth because you have that grace. और सच्चाई पर कायम रहें क्योंकि आप पर फजल हुआ है And because of that grace, और उस फजल की वसीला से Peter says later पतरस बाद में ये कहता है that you will grow in the knowledge of Lord Jesus Christ. कि आप खुदा के इरफान में उसकी मार्फत में बढ़ते चले जाएंगे When you come under His grace, कि जब आप उसके फजल के तहत आते हैं the result is holiness, तो उसका नतीजा पाकीज़गी है, not only justification, ना सिर्फ azadi. आजादी, Not that only we are justified because of grace of Jesus, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें आजादी हासिल हो जाएगी यीशु मसीह में, but we are sanctified बल्कि हम पाक किए जाएंगे and we become Christ-like. और हम मसीह की मानद बन जाएंगे। We can become Christ-like हम मसीह की मानद बन सकते हैं in holiness. पाकीज़गी में।